Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Dear friends, this is Bashir Ahmad and you are watching my daily dose. Dear friends, आज के इस डेली डोज में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मदरबोर्ड के एक और अहम कंपोनेंट रिबन केबल्स को समझेंगे. So let's start. What is a ribbon cable? What are its types? And for what purpose the different types of cables are used. रिबन केबल. डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक हार्ड ड्राइव मदरबोर्ड से कैसे कनेक्ट की जाती है और डेटा कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है? जी हाँ, मैं बताता हूँ. कंप्यूटर के अंदर केबल्स होते हैं जो मदरबोर्ड को दीगर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर देती है. इन केबल में रिबन केबल सबसे अहम है. जी हाँ, रिबन केबल. व्हाट इज रिबन केबल? रिबन केबल also known as multi-wire planar cable. It is wide and plate like ribbon. It has many conducting wire running parallel on the same plate plane. Why ribbon cable is used? Ribbon cable is used to connect internal computer devices, mostly drives like CD drive, floppy drive, hard drive to the motherboard for the purpose of communication and data transfer. Ribbon cable have three main types. IDE cable. IDE mean integrated drive electronics cable. SATA cable, serial advanced technology attachment cable. And FD cable. FD mean floppy disk cable. IDE cable. IDE stands for Integrated Drive Electronics Cable. IDE cable was developed by Western Digital Corporation. What does Western Digital Corporation mean? Actually, Western Digital Corporation is a company name. IDE केबल को एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट भी कहते हैं. इस केबल को एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इंटरफेस भी कहते हैं. इसके अलावा आईडीई केबल को पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के नाम से भी पुकारते हैं. आईडीई केबल रिबन केबल का एक स्टैंडर्ड है. आईडीई केबल रिबन केबल का एक मयार है जो कि हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. रिबन केबल चौड़ा होता है, वाइड होता है, प्लेट होता है और रिबन केबल डेटा पैरेलल ट्रांसफर करता है. इसके अलावा रिबन केबल हैव 40 to 80 wires and ribbon cable have 2 to 3 connectors. One ribbon cable can connect two drives, master and slave. Master means storage drive from which the computer is boot, and slave means additional storage drive. Ribbon cable used in older computer. IDE cable used in a older computer. IDE cable has been replaced by SATA cable.
आप रिबन केबल यानी आईडीई केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो सामने है ये आईडीई केबल है। सेटा केबल, सेटा स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA cable is a new technology. SATA cable is used to connect storage devices such as hard disk, SSD to motherboard and transfer data serially, making the cable thinner and faster. The transfer speed of this cable is 1.5 Gbps up to 6 Gbps. This cable is used in modern computer, both in laptop and desktop. Dear friends, different version of this cable is available. For example, SATA 1, SATA 2 and SATA 3. The speed of each category of these cable are shown on the screen. Another type of SATA cable is called eSATA. eSATA stands for External Serial Advanced Technology Attachment, which is used to connect external drive with similar high speed. Moreover, this cable is narrow, flexible and connect one drive per cable. स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ अक़साम के सेटा केबल देख सकते हैं। FD केबल, FD cable stands for floppy disk cable. Floppy disk cable is used to connect floppy disk drive to motherboard. Floppy disk cable is plate ribbon cable, similar to IDE cable but narrow. Used in old computer for reading writing data into floppy disk. Floppy disk drive is no longer used in modern computer, so floppy disk cable has no more use. क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की जगह मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस ने ले ली है, जिससे इस केबल का इस्तेमाल मजीद न रहा। आप स्क्रीन पर फ्लॉपी डिस्क केबल को देख सकते हैं, बिल्कुल आईडीई केबल की तरह है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो आईडीई केबल से कम है। थैंक यू वेरी मच।